this imposing aura. A body how much effort from a purely technical... You sure are something. But I don't think he's reached the spirit... Strife is... Can you feel it? Hito, what... Do you not realize? The strife engraved upon a gnosis. To Vat's current... All those lost... This is no wonder your own people have abandoned you. Your judgment is as your existence. This is where everything ends, Booer. The god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Come! Let us reenact... Share my knowledge! Perish! Rain cutter! Emerge, right here. Feeble human! Insignificant pest! Rain outlines your fate. Let me read you a verse. At my command, you shall fall! Tremble! Burn to oblivion! Emerge, right now. No more game! Wind, hear me! I see everything! Go as what? Reality is pain! This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself? Welcome to our stream, bhai. Thank you for coming. अरे अभी मतलब 15-20 मिनट पहले मैंने स्ट्रीम करी मगर लाइट चली गई थी फिर से स्ट्रीम चालू करनी पड़ी मुझे. The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? Thank you for coming, भाई. अभी स्कारामुचे के साथ अपनी फाइट हो रही है अभी. We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you,
The people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and कट samsara सीन लगता है भाई अभी cycles. यहाँ पर अपने को वॉइस बंद करना. Power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? स्टोरी बाई स्टोरी नहीं है ये. Not the story. I'll leave this It to you. Archon quest है भाई. Archon First quest. sage of Boor. ठीक है. और हाँ फिर लाइट चली गई थी भाई हमारी, इसलिए फिर से स्ट्रीम चालू करनी पड़ी मुझे. मैंने 9:45 बजे. The all-knowing God. Body and mind. Kneel. Body and mind. No, my sword. Ring cutter. Burn to oblivion. Emerge. खेलना कैसे पड़ता है मुझे नहीं पता यार. What a nuisance. Reality is pain. Good riddance, cruel world. Everyone hold hands. I swear by my sword. Time to act. Right here. Emerge. Right now. कैसे Your खेलना new पड़ता है इसको? god awakens! Lasts forever. Now, your eyes have been opened. भाई खेलना कैसे
पड़ता है इसको नहीं पता अभी तक। I let my guard down. Not good. Time to act. नहीं था चेंज करो, नहीं था नहीं। Reality is pain. Burn to oblivion. Rain outlines your fate. Kneel. Dear me, emerge. Right here. Right now. Tremble. खत्म हो चुका लगता है ये। Humans. Filthy humans. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. अरे थैंक यू भाई। अभी तक हमें पता नहीं है, अगर यूला नहीं मिलती तो हम कंफ्यूज किसी को पुल करूँ, कोकोमी या वांडरर। अच्छा अच्छा अच्छा, वांडरर अच्छे भाई, कोकोमी तो भाई हीलर है, वांडरर अच्छा डीपीएस बनेगा आपका। Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. वांडरर सबसे बढ़िया लगता है But I मुझे, didn't expect the remaining consciousness of Greater मगर Lord मैं कोकोमी Rukkhadevata to निकालूंगा be as यार। polluted as मुझे this. वांडरर उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे हाइड्रो अप्लायर एंड हाइड्रो मतलब अपने ये प्लूम टीम के लिए मुझे हीलर भी चाहिए, और अच्छा है मगर यार वो। Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? वांडर ओपे है, बट कोकोमी लेना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देंद्रो टीम्स प्लस आया का फ्रीज। हाँ ये भी अच्छा है, मुझे पर्सनली भाई वांडरर का प्ले स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता Your है। inference seems logical enough.
Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness हम of तो आया Greater का Lord मेल्ट यूज करते हैं, मजा आ Rukkhadevata, रहा है. अच्छा and it's also been मेल्ट टीम affected अच्छी by है. हाँ, forbidden knowledge pollution, वंडर का प्ले स्टाइल ओपी है, बट कोकोमी का हील ज्यादा है, ओवर पावर्ड लगता. Greater Lord हाँ भाई, कोकोमी Rukkhadevata... अगर मुझे ये नहीं मिला, ठीक है, अगर काजुआ नहीं मिला तो मैं कोकोमी के ऊपर ट्राई करूंगा. Yes. It's very possible that she मगर मुझे भाई काजुआ sacrificed her किसी भी life हालत in में the चाहिए, fight क्योंकि मेरे against पास अभी forbidden 3000 knowledge. से भी ज़्यादा प्रीमोजेम्स आ चुके हैं. तो भाई कोकोमी तो मतलब काजुआ तो चाहिए मुझे. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past मगर मेरे 500 भाई मेरी years. टीम में काजुआ का कोई काम नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई हीलर का थोड़ा प्रॉब्लम है. देखो, हाइड्रो शिंगचू है मेरा, और इलेक्ट्रो मेरे पास डीपीएस के हिसाब से मैं अपनी मीको को यूज़ करता हूँ, और हीलर के हिसाब से देखो जीन जो है एनिमो कैरेक्टर है, मगर भाई वो एलिमेंटल रिएक्शन नहीं कर पाती, मगर वो हीलिंग अच्छी कर लेती है यार. इसलिए इस टीम में काजुआ का कोई काम नहीं है. वो फ्रिज टीम में या फिर मेल्ट हो गया दूसरी टीमों में एडजस्ट हो सकता है, मगर मेरी इस टीम में तो एडजस्ट नहीं होगा वो. इसके लिए मुझे फिर से अलग कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं कर लूँगा. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Yes, her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. Don't worry, it should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. अभी मुझे देखना पड़ेगा उस कारामुचे को, ठीक है, उस कारामुचे को कैसे हराते हैं. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Witness the power. Emerge. Right now. Emerge. कारामुचे वही तो बोल सकते अपन. वही तो जो है वही है. What a nuisance. Right here. Right now. Right here. छोड़ दे. Body and mind. जो भी हो उस कारामुचे. Everyone hold hands! Rain outlines your fate. Let me weave you a... Emerge. Right here. Ha!
sigils have appeared in the sky! भाई यार सीन कितना अच्छा है ये, एकदम बहर। I see everything. भाई इनको No, क्या my हुआ? soul! Witness the power of both. Emerge, right here. रिमेम्बर, मुझे रिमेम्बर नहीं अभी तक। Emerge, right here. Emerge, body and mind. Body and... Let me weave you a web. Right now. Emerge. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. वाह वाह वाह, ऐसी कौन सी कॉन्शियसनेस है यार इनकी? नेट में भी ऐसी डोमेन थे, रिमेम्बर? अरे मुझे नहीं पता भाई। We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. कॉन्शियसनेस वाली बोट। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No, it seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? हेलो पेन, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर कमिंग भाई। अरे यार आपने बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया यार। This is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, but the one standing over there is... Is that... me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? अरे वाह, Irminsul and the surrounding lands have भाई been देखो reproduced here आर्कॉन as they क्वेस्ट were है, years इसको एंजॉय ago. कीजिए। But this is just a realm of सैड consciousness. सीन देखो, एंजॉय कीजिए बिना किसी और मतलब वॉइस ओवर के, ठीक है?
बिना किसी वॉइस ओवर के सभी। पहले वाला लाइव का क्या हुआ था? हाँ भाई, सेव हो चुका है, वो आपको कल दिखाई देगा। अभी तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको कल दिखाई देगा। मगर भाई ठीक है, इसको एंजॉय कीजिए बिना किसी वॉइस ओवर के। We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature? Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone, along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world.
and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Teyvat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. I'm exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way.
is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. विवेक भाई, एलिकेटर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। ठीक है, यहाँ पर एक कट सीन था भाई। ठीक है, कट सीन था, इसलिए भाई मतलब मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया था। सॉरी आप सभी को, क्योंकि कट सीन में मैं कभी भी वॉइस ओवर नहीं करता हूँ। और भाई ये कट सीन देखकर मतलब गूज बम्प आ चुके मेरे मतलब शरीर पर भाई। यार इतना मतलब काफ़ी इमोशनल था ये कट सीन। पूरे जेंशिन में सबसे इमोशनल सीन था ये। होप सो आपने अगर इंजॉय किया हो तो भाई। मैंने पहली बार देखा, मतलब भाई क्या सीन था वो। I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. अरे जैसी भाई, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। थैंक यू फॉर कमिंग भाई। भाई यार आप बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि हमने अभी एक कट सीन देखा, काफ़ी इमोशनल था। Yeah, what's wrong? Weren't you there just now?
अरे अरे क्या हो गया? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो चुका है? डॉक्टर आ गया लगता है वो। Huh? That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be Hey, alone man. with you. My man, All the doctor. precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. डॉक्टर तो How काफी does the खतरनाक God है of ये। Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the Don't plan worry, to I create a did god say as nothing their against ultimate goal. faith, Yet you only saw it as an ordinary experiment. Wait, guys. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? भाई यार ये कन्वर्सेशन यहीं के बंद कर दो, ठीक है? ये इनको ठीक है, जो भी है मतलब इंग्लिश अच्छी तरीके से जानता हो तो मेरी तरफ से वो बोले कि ये जाति भेद मत करो और यहाँ पर इसी मतलब यार हमारे मतलब स्ट्रीम पर ऐसी कोई बातें होना नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसी बातें कोई यहाँ पर अब नहीं करेगा क्योंकि ये भाई स्ट्रीम है, यहाँ पर हम कोई मतलब बड़े के बड़ी कोई अभी सरकारी कोई कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसलिए प्लीज़ ये कन्वर्सेशन यहीं कहीं बंद होना चाहिए अभी, ठीक है? यहीं कहीं बंद होना चाहिए। आप सभी को वार्निंग दे रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पर ये कन्वर्सेशन यहीं पर बंद कर दो। Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? क्योंकि भाई इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? एंड नहीं है यहाँ पर किसी के भी। हाँ ठीक है, यू कुड से दैट, बट भाई देखो इसके बारे में ज़्यादा बातें मत करना क्योंकि ये इसका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ता जाता है और हमारे स्ट्रीम पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात को अभी छोड़ दो। यस
यस यस यस शेखर सिंह भाई और गेमिंग स्ट्रीट भाई, ठीक है, थैंक यू फॉर कवरिंग मी। I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. Let's enjoy the stream. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, ठीक है, होंकाई की स्ट्रीम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे होंकाई से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और होंकाई की ज़्यादा कोई स्ट्रीम देखना नहीं चाहता, उस पर ज़्यादा बंदे भी नहीं आते और मुझे उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। होंकाई स्टार रेल का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम होंकाई स्टार रेल की स्ट्रीम अभी मैं करने रहा हूँ। मतलब उसके मैंने एक हफ्ते से उसकी स्ट्रीम कर रहा था, मतलब ज़्यादा बंदे नहीं आ रहे थे, सभी को जेंशिन देखना पसंद है। थैंक यू। थैंक यू। अब ठीक है, वो ठीक है, सबको पता चल गया शेखर सिंह भाई, अभी बहुत हो गया, ठीक है। यस, उसका स्प्ले स्टाइल मुझे पसंद है, मगर भाई उसको कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको नहीं खेलता। सभी को जेंशिन ही पसंद है। I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Okay. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? वो तो है भाई, attract farming. And if so, मुझे पसंद नहीं है, मगर भाई वो how do आपने the को Fatui plan to कैरेक्टर्स deal with का the consequences? कैरेक्टर्स की पावर To gamble या such फिर a possibility उनके with me? एबिलिटी अगर बढ़ानी हो तो भाई उनको तो फार्मिंग करना पड़ेगा। How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your Gnosis का क्या करेगा नहीं था, consciousness. मुझे नहीं पता यार, मैंने भी अभी तक नहीं देखा, खा जाएगी नहीं तो। As a scholar, I respect all possibilities. This has same. always been my मैं भी दोनों का ही बोल principle रहा and था। is an और essential होंकाई का भी। trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign भाई Gnosis डॉक्टर will only lead to की disaster आवाज़ if मतलब it वॉइस stays ओवर भाई in मतलब Sumeru. थोड़ी But this electro-Gnosis मतलब is the उसका prize I obtained after थोड़ा- defeating one of your fellow harbingers. डॉक्टर के जैसा ही है, मतलब एक विलन की तरह As the one आवाज़ who है उसका। initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort.
requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. होंगे संतनु भाई यहाँ पर Like तो you होंगे ही said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have What is you your- managed to do अरे that? यार बाकी सारे बंदे कहाँ हैं क्या मालूम यार जैसी भाई को see. टाइम आउट दे दिया लगता If है you think all those versions Nightbot of ने me are worth और a gnosis, अल्केट्रा भाई क्या मालूम कहाँ then गए वो deal. अल्केट्रा भाई कहाँ पर है क्या You sure मालूम didn't उसके hesitate बाद much. विवेक भाई आए Is the थे relationship विवेक भाई between यहाँ पर all है the क्या नहीं versions of you वो really भी नहीं that जानता bad? I don't बता think कर there's भी any need नहीं to जाते dwell यार on सभी that. ठीक The है surplus बताते versions बता of कर me तो can जाओ be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? किसके पास है Besides, with my abilities, इलेक्ट्रोग्नोसिस मेरे पास it's नोसिस only a नोसिस matter of time until I find राइडिंग के better पास होगा राइडिंग के पास perspectives. मेरे हिसाब से Perhaps it's best to say क्योंकि वो you're just इलेक्ट्रिक कैरेक्टर ऐसे ही temporarily है ahead. वो तो एक But what बार I'd like to know is, how can you be sure that अच्छा है I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make Good this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of नादा academics ने once दिया again. था उसके बाद डॉक्टर के क्या सारी कॉपी इरेज कर दिया तो बोला अनैदा ने अच्छा 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 दोतरे विल टेक बोथ टेंदरो एंड इक्टो वन नाउ डॉक्टर There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third के time. पास चला गया भाई डोंट मेक स्पॉइलर मुझे आगे की बात मत बताओ ठीक है आगे क्या होने वाला है ये मुझे प्लीज़ बताना मत क्योंकि देखने का कोई मज़ा नहीं रहेगा Another chess प्लीज़ ठीक है piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? अच्छा 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 ठीक है 5 है मगर भाई मुझे अभी इसके बाद क्या होने वाला है ये सिर्फ मुझे बताना मत ठीक है यहाँ पर अभी क्या होने वाला है मुझे सिर्फ बताना मत People exchanging knowledge with the मतलब god of देखने wisdom का is कोई the मजा नहीं stuff होगा of ठीक है legends. Yet here देखने you का wish दृष्टि to में तो पूरा exchange का पूरा knowledge for मूड the खराब हो god of जाएगा wisdom's property. क्योंकि आप सभी को पता है कि आगे क्या होने वाला है मगर मुझे नहीं पता तो मुझे प्लीज़ बताना मत ओके मत बताओ थैंक यू Arrogant as that यही is, सही रहेगा it क्योंकि has मुझे piqued my interest. स्टोरी इंटरेस्टिंग Let me ask you, have you in all your mighty knowledge यार आपको ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake?
That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. मेरे को स्ट्रीम में बोलने देगा। नेसिस पोतो के पास तो गया होगा डीसी 22 पे। ये सभी कॉन्वर्सेशन आप डिस्कॉर्ड पर जाकर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पतो ही बुरे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari can stop us from going out now, right? स्पॉइलर ने तेरे पास कुछ क्वेश्चन पूछ रहे सतन से। अच्छा अच्छा अच्छा। आकाशा बंद हो चुका है। Come on, traveler, let's go. Complete. Surely that little girl must be leaving soon. Okay. Nice. बहुत बढ़िया। गेमिंग स्ट्रीट भाई बंगलर बोली संतोषी पूजा देखा मछली थे हमारा 60 था टाइम शो पहुँचा हो विक आर्कॉन में कुछ तो डेंजरस होने वाला है मुझे लगता है। अच्छा अच्छा संतनु एक क्वेश्चन है मेरा, आर्कॉन डीपीएस कैरेक्टर होगी या फिर सपोर्ट? कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Elazar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. सपोर्ट लग रहा है। गणेश ब्रो, I was inviting gaming street bro, तो पूजा over here and BD is fun over here. BD मतलब क्या? BD मतलब क्या कहना चाहते हो? BD का मतलब समझ नहीं मुझे। They're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you तो after you मज़ा went to sleep आएगा। last Like night. child, I like कोलकाता। Nope. Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. हाँ, So डिप्रेस Paimon कैरेक्टर didn't हो तो open बहुत it. मज़ा आ जाएगा। Alright, let's read it now. चाइल्ड, हाँ चाइल्ड की तरह टाग लिया। Oh, it's from Milu. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I I'll don't wait for and you. can't eat. The date of the cow. banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Oh, you're embarrassing me. Anyway,
Master Tainari. बड़े बड़े कानों वाला, बड़े बड़े कानों वाला मास्टर। मजा आता है उसके साथ बात करने में। मतलब भाई ताइनारी सबसे बढ़िया, मतलब इंटेलिजेंट है वो, साइनो की तरह। Ah, good morning. How do you feel today? ग्रेविटी से रिलेटेड। We feel much better. How about you? We are Sanatani cow was God. Don't ask stupid question. Bhai, what are you saying? Why ask to eat cow? शेखर हाइड्रो आर्कॉन ग्रेविटी से रिलेटेड होगा। अच्छा अच्छा, ग्रेविटी से रिलेटेड। I'm recovering well. Thanks for asking. पावर ऑफ Well, from the ग्रेविटी। looks of it, you seem to be अलग ही है। already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my forest watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, Muslim everything else started to and recover cow is God for too. us. I was asking, enjoy veg, kachipuri and puja. अच्छा अच्छा। Yes, but there are still some residual effects. Okay, The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. अरे फॉरगॉट भाई, शेखर सिंह वो बताना नहीं चाहते थे। सॉरी सद्दत भाई। शेखर सिंह भाई थोड़े मतलब मिसअंडरस्टूड, मतलब अंडरस्टैंड हो गया उनका। ठीक है यार, आप कौन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हो सभी के सभी। गेम के बारे में पूछो यार, बाकी के सारे स्टफ़ के बारे में मत पूछा करो। गेम के बारे में पूछो कि यहाँ पर गेम के देखने आए हो ना, तो सिर्फ गेम के बारे में पूछा करो। By the way, we have some और good हाँ, मैं अभी news. Sino 15 got मिनट his में जाने possession वाला back. हूँ। ठीक है, सभी को बता दो। 15 मिनट This में news is hardly new. He had already stream बंद mentioned it करने to me वाले हैं। before. We are Huh? You mean अभी he was जाने, already ठीक है here? उतना ही। Why didn't he हम come जाने to वाले say हैं hi अभी। to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps. Or, alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kale has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. 58 Not to mention me. वाह। You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The Janus sages कौन है ये? involved in recent incidents have begun their training in the Avidia forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. है क्या बोलना चाहते? अरे नहीं भाई, वो पता चल गया मुझे, मगर वो कुछ अलग बोलना चाहते थे। गेमिंग स्ट्रीट भाई ने एंजॉय द स्ट्रीम, क्योंकि भाई इस बारे में हम अपनी स्ट्रीम पर बातें करना नहीं चाहते। तो गेमिंग स्ट्रीट मतलब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब उनको समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाहते थे। वो अपने हिंदू धर्म के लिए, मतलब सनातनी मतलब सनातनी धर्म के लिए, भाई हम सभी सनातनी हैं। तो इन शॉर्ट मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि भाई वो ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते थे सदत भाई, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। लीव द टॉपिक एंड एंजॉय द स्ट्रीम। Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies, and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidia forest. हाँ यस, अरे हाँ क्विट नहीं करता तो। अरे हाँ, आपका अकाउंट अभी तक नया आया लगता है गेमिंग स्ट्रीट भाई।
then भाई I think I should leave. I'm making everyone for everyone and अरे 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 भाई कुछ कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रह सकते हो, मैंने उनको बता दिया है। ठीक है you play at least 1 year right then review my account। ठीक है सदत भाई, कोई बात नहीं, अभी उनको मैंने बता दिया है। आप अगर आपको सोना है तो आप जा सकते हो, मगर भाई ऐसे नाराज़ होकर मत जाओ, क्योंकि मैंने उनको समझा दिया। वो उनका मतलब मिसलीड हो गया था, मतलब वो उनको समझ में नहीं आया था आप क्या बोलना चाहते थे। ठीक है, उतना ही। अब इसके बाद ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, सभी को ये बताना चाहूँगा मैं। When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. I'm not angry, but we are all friends and buddies over here. Yes, thank you. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. Yes, you can say that. हाँ भाई, you can say that. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? By the way, my account. Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? अभी You've recovered well. You may go. But be careful. sure I can review, but I need your ID. Yay! Will do! आज फॉर शो माई अकाउंट जनरेशन कैरेक्टर देखना। अच्छा देख लेंगे मेरे भाई, रुको ज़रा सब्र करो। आपका संतनु नाम से ही है ना? सब्र का फल मीठा होता है। ये सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। Something on your mind again? Oh God, my Hindi is bad, sorry. अरे नहीं, कोई बात नहीं। This is it. अकाउंट रिव्यू करने का है भाई। ठीक है, ये है उनका अकाउंट। क्रिट रेट काफ़ी कम है उनका, क्रिट डैमेज काफ़ी बढ़िया है। वॉच हाउस बाकी है, कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा। एलिमेंटर राशि काफ़ी कम है। हाँ, फोपिस ब्लिज़र्ड स्टेयर। क्रिट रेट भाई उसका ये सिग्नेचर वेपन है। ठीक है, सिग्नेचर वेपन अच्छा है। 33.4 क्रिट डैमेज है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा है इसका क्रिट डैमेज। ये सबसे बड़ा पीसी इनका। अरे वाह, T0 10 10 10। ओके,
ये रहा उनका जोंगली। अच्छा, बहुत बढ़िया। HP बहुत बढ़िया है। ऐसे आर्टिफैक्ट भी मिलते हैं क्या जेंशिन में? हाँ, मिलते होंगे यार, मिलते होंगे, कुछ कह नहीं सकते। एनर्जी रिचार्ज, ओके। स्काईवर्ड स्पाइन, टेनासिटी ऑफ द मिलिलिथ, ओके। अच्छा है। HP % ऑन सेंस। मैन हो गानियों पे सबसे ज़्यादा मेहनत किया है। अच्छा, मेहनत किया था गानियों में भाई, बहुत बढ़िया। आज तक मुझे नहीं मिला, बस डिफेंस मिला है। हाँ, डिफेंस मिला है। HP % भाई इसका, अरे बाप रे, ये तो सबसे बढ़िया आर्टिफैक्ट है यार। ऐसा सभी का ड्रीम होता है ऐसा आर्टिफैक्ट लेना। आई एम रियली इन लव विथ दैट गानियो। क्रिएटेड ऑन सर्कुलेट C0 10 9 10 9। अच्छा, बढ़िया है। ER काफ़ी बढ़िया है इसका। क्रिट डैमेज सही है। होली मदर ऑफ आर्कॉन द HP गॉबलेट। बाप रे बाप, सिग्नेचर वेपन बढ़िया है। पैसे वाले लगता है भाई संतानो भाई तो। बाय द वे प्योर F2P, मुझे तो नहीं लगता भाई F2P होंगे, क्योंकि आपके पास इसका भी इसका सिग्नेचर वेपन है, इसका भी सिग्नेचर वेपन है ऑन गेमिंग स्ट्रीट। भाई आई एम जेलस राइट नाउ। जेलस होना चाहिए भाई, इनके पास सारे के सारे अच्छे आर्टिफैक्ट्स और अच्छे सबस्टैट्स भी है और अच्छे वेपन भी है। ये काफ़ी गलत है यार। स्टैंडर्ड बैनर से मिला था गानियों का, अरे वाह। अच्छा, और ये कहाँ से मिला था? इसको लेना भाई काफ़ी कठिन होता है हमारे हिसाब से। क्रिट डैमेज ऑन सर्कुलेट, अच्छा है, बढ़िया सब स्टैट्स है आपके। राइडन के वेपन के लिए 1 ईयर फार्मिंग किया है। बाप रे बाप, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हो तुम तो। जीनियस ब्रो, आई थिंक यू आर टायर्ड। हाँ, आई एम वेरी टायर्ड। मुझे सोने जाना है भाई। इनका अकाउंट रिव्यू करने के बाद मुझे जाना है सोने। बहुत नींद आ रही है मुझे। आंखें पूरी की पूरी भारी हो चुकी है मेरी। फर्स्ट आर्कॉन, सेकंड आर्कॉन, थर्ड आर्कॉन एंड 4। भाई चारों के चारों आर्कॉन है उनके पास। काफ़ी सही एलिमेंटल मास्टरी है। एलिमेंटल मास्टरी सही है भाई। एंड करो स्ट्रीम, मेरे को होता देखना है। ओके ओके ओके, दिखाऊंगा। ऑफिस वांडरर एको, गुड नाइट। अभी आकर आप बोल रहे हो गुड नाइट एको। थैंक यू फॉर कमिंग भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, अरे एको भाई। स्ट्रीम पे आने के बाद सभी हमको बोलते हैं कि ठीक है, हम हमारी स्ट्रीम पर आने के बाद सभी बोलते हैं कि भाई हेलो। केम छो भाई, केम छो। हमारी स्ट्रीम पर आने के बाद सभी बोलते हैं कि हेलो भाई कैसे हो। हाँ, और आप आकर ही हमको गुड नाइट बोल रहे हो। एक तो हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसके बाद आप गुड नाइट बोल रहे हो। वालो तुम्हें काम आछो। वेट गेमिंग स्ट्रीट को बंगाली हो सकता है, हमें तो नहीं पता। काफ़ी बढ़िया है एक्वा भाई, तुम्हें बंगाली। एलर्जी रिचार्ज ऑन सेंड्स, ऐसा कैसा है भाई? DPS है क्या ये? DPS लगता है मुझे कभी कभार। C0 9 9 11
भाई इसके ऑटो मतलब नॉर्मल अटैक बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उसके सिर्फ स्किल और बर्स्ट अटैक बढ़ाने की ज़रूरत है सिर्फ उसको। होता हो देखनी सभी को। भाई तुम्हें गेम कॉपी भालो silly Billy Hilly Churl. 65 क्रिटेड तो बहुत बढ़िया है। हाँ मेरे हिसाब से होता हो ज़्यादा क्रिट करती है, इसके लिए इसको क्रिट रेट अच्छा है। 188 क्रिट डैमेज, 100 एनर्जी रिचार्ज। नहीं इधर अभी देखो, नहीं इधर अभी देखो, देखूंगा। ईएम अच्छा है। पॉपी सिमेनावा अटैक बढ़ाने के लिए ऐसी होता हो मैंने पहली बार देखी है। क्रिट डैमेज 30%, बाप रे बाप। HP ऑन सैंड्स, अच्छा आपके पास ये वेपन है इसलिए आपने सैंड्स में HP दिया है। बढ़िया है, सही है यार, काफ़ी बढ़िया है। सैंड्स ऑफ होता हो। हाँ वेपन ड्रैगन्स बेन है भाई एलिमेंटल मास्टरी वाला, इसलिए उन्होंने सैंड्स में HP दिया है। HP पर स्किल का मतलब HP ज़्यादा होनी चाहिए उसकी मेरे हिसाब से। तो महिदा देखनी पड़ेगी अभी इनकी। 7193 चार्ज अटैक में 100 आता है होता हो। अरे वाह सही है। R5 विटसेथ ओह DPS नहीं था, अच्छा है। 28 भाई क्रिट डैमेज, इतना सारा भाई, इतने सारे अच्छे स्टैट्स कहाँ से लाते हो यार तुम, इतने अच्छे स्टैट्स कहाँ से लाते हो। ER ऑन सैंड्स ठीक है। इसका ER कितना है? 151। अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ पर एलिमेंटल मास्टरी होनी चाहिए थी यार। ER क्यों दे दिया आपने? अगर आपके पास कोई ER वाला कैरेक्टर नहीं हो तो आप संतनु गेम खेल क्यों ना 30 डेज पकाई चलो। क्या बोलते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे हिंदी में बात करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या दोनों क्या बात कर रहे हो। ठीक है ये है इसके सब स्टैट्स। संतनु भाई योला की काम यार, तो सभी के सभी हिंदी बोलो यार, जीमेल का प्रॉब्लम हो। अच्छा 910 बढ़िया है। ये उसका नॉर्मल मतलब स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ स्किल मेन है उसकी, बाकी का कुछ ओह। Let's work through it together. Two heads are better than one. ठीक है गो टू द ग्रैंड बाजार। अभी नहीं जाऊंगा मैं, अभी मुझे सोने जाना है मेरी जान। चलो भाई 12 बज चुके हैं, आप सभी भी जाओ सोने के लिए। सभी को गुड नाइट। टाइटन फॉल TTF भाई यार बहुत यो ब्रदर 12 बजे आ गए तुम, अभी मुझे सोने जाना था। थैंक यू फॉर कमिंग भाई। वैसे अरे टाइटन भाई मेरा भी सोने को जाना है, मुझे सभी को बताना चाहूँगा। आप आए मतलब अच्छा हुआ, आप आए तो थैंक यू फॉर कमिंग आप सभी को। मगर और हाँ क्या नाम है इनका, एक्वा भाई। अगर आप नए हो हमारे स्ट्रीम पर तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना जो भी हमारे स्ट्रीम पर अभी है। ठीक है जो भी हमारे स्ट्रीम पर है तो ओके थैंक यू। हाँ सोने कौन रोका रखा है, जीने की तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जी लो मज़े में। हाँ भाई हम तो जी लेंगे मज़े में, आप भी जी लो। मगर आप सभी को बोलना चाहूँगा 12 बजे सो जाया करो, ठीक है 12 बजे सो जाया करो। अभी टाइम हो चुका है हमारा जाने का। थैंक यू फॉर कमिंग सभी को, और जल्दी से आया करो 10 बजे हमारे स्ट्रीम पर। तब आप 12 बजे आने के बाद
हमारी स्ट्रीम एंड होने के बाद मत आया करो, ठीक है? क्योंकि भाई आप बहुत सारा कंटेंट मिस कर जाते हो, ठीक है? बहुत सारा कंटेंट आप मिस कर जाते हो, इसीलिए आप सभी को बताना चाहूँगा जल्दी से आया करो हमारी स्ट्रीम पर। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अरे टाइमर मत देना, अभी जाने वाला हूँ मैं, ठीक है? अरे हाँ, और बाय बाय एवरीवन बाय बाय। और एको भाई हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू फॉर कमिंग आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, लेट्स मीट अगेन टुमारो, बाय बाय। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, बाय एको भाई, शुभरात्रि शुभरात्रि, गुड नाइट, पीस।